is shown. Which property of the object is not conserved? So, just as you observe, कि velocity strikes a wall and rebound. When something rebounds, the velocity sign will be negative. Rebound always means Ela- Elastic collision. rebound means velocity is negative. Which property of the object is not conserved? So momentum is always conserved. Is Mass used is conserved. mass conserve होता है. G. It stays the same. Yes, mass is conserved. Momentum is conserved. यहाँ पर what's the case here? It's a rebound. Momentum is conserving or not? It's coming back. अच्छा, momentum is, it's a rebound case. Property of the object. अच्छा, he's clever now. He's not saying system. Momentum is conserved for the system, not for the object. So he's trapping us. Let me highlight the word which he's using to trap us. Momentum is always conserved as of the system. He's trapping us. He's using the word momentum of the object. Here the momentum of the object will be mv minus mv. So momentum is becoming 2mv. Momentum is conserved for the system, but not for the object. Speed is conserved because the letter V is the same. Momentum is conserved for the system, but not for the object. What about kinetic energy? Kinetic energy is not conserved. It is जाते वक्त आते वक्त kinetic energy क्या होगी? Half mv square. In the return journey, kinetic energy will be half m minus v square. So it will be half m v square. So kinetic energy is conserved. लेकिन उसमें तो सारा कुछ कंजर्व हो रहा है. Momentum is not conserved ना. आते वक्त momentum mv था, वापसी पर सिस्टम का मतलब क्या होता है दोबारा? System means जो जो दो चीजें, the two objects which are colliding, is the system together. देखो आते वक्त momentum था mv. So in this case, it's the ball and the wall. Yes. Look, momentum is not conserved. Okay. The diagram shows two spherical masses approaching each other head-on at an equal speed u. One is of mass m and the other is of mass 2m. Which diagram showing the situation after the collision is not consistent with the principle of conservation of momentum? So we can't use any of those formulas in this situation. We can take, first we find the total momentum before collision. This is the situation. So let's work out total momentum
This is I'm getting as initial momentum. सर वो 1 mu है या LMU है? Sorry. Is that LMU? हाँ, LMU plus minus. हाँ, क्योंकि because the other velocity is negative ना, तो m 2mu minus mu. अच्छा वो 2 है, ओके ओके. 2mu plus minus mu equals mu. अब ये just work out every part. Can you work out the first one? We need to find out where we are getting the answer as mu. तो हमने इन सारों को सिंप्लीफाई करना है. Hmm? हमने इन सारों को सिंप्लीफाई करना है. Yes. And our target is to get mu. I'm getting D as my answer. तो आपको कौन सा मिल रहा है? The last one. तो मुझे कुछ और मिल रहा है. Hmm. मुझे B मिला है सर. D. Yeah, I'm also B getting D, the last one. Actually, you're getting B. for ball. Oh. We have to check it because I have checked all my options. Let me check it. I'm making a mistake. Maybe I'm getting 2m plus 3m.
total momentum after collision is surely getting mu. The spheres stick together, coalesces. Acha, what your acha, solve, let's solve. B is -2. Minus u upon 3. Oh, right. B is also coming mu, because it is minus u upon 3 minus 1 upon 3 plus 2 upon 3. Achha, are you sure you're getting mu in the first in the B part? Are you getting mu? Yeah, I'm getting mu as my simplified answer. Okay. So now we have a tie. Achha, solve D part. Answer is B. I also favor you, but how we justify then D? D का भी अगर mu आ रहा है, maybe it's because of the picture. That's what differentiates. Hmm? Achha, what we are getting for A? What is the answer we are getting for A? What is the working result? और मुझे 3m मिला था. A का. जी सर. The answer for A you're getting is 3m. 3mu. Sure. But I don't think this is correct. मैंने कोई method use कर लिया है. Here you have to take LCM, na? Just simply minus 2 upon 3. मैंने बस values को calculator में डाला, मैंने कुछ values को cross multiply किया, and that's how I got 3mu. अच्छा. Abhi to we have to coincide with B. B is logically right because B is rebound case also. When which diagram showing the situation after the collision is not consistent with the principle. अब मसला ये आ रहा है कि B का आंसर MU आ रहा है. He says not consistent with the principle of conservation of momentum. फिर ये तो consistent हो रही है. That's a problem. Can you check the calculation again? Let me check also. You know what he is saying, Hassan, sorry. He is saying that you have to find the situation which is not consistent. Look, not. तो B तो फिर And coincide कर रहा है. ऐसा करते हैं B की calculation. Let's check it again. Because you know why? Because अगर ये MU आ गया तो फिर तो ये match हो गया. Are you getting my point? So it will minus mu upon 3 plus 2mu upon 3. जरा देखो इसको जी. और इसको सिंप्लीफाई करो. ये mu नहीं आ रहा. ऊपर आएगा 2mu minus mu. How much is 2mu minus mu will be mu. So it is mu upon 3. It's not coming mu. Some calculation error was there. अब जरा इसको चेक करो. इसको भी मैं आपके लिए लिखता हूं, फिर आप मुझे बताओ. पहले इनको इसी तरह लिख लो. माइनस
ब्रैकेट खोल के ना, -2 mu, कैलकुलेटर में मत डालना, अपॉन थ्री प्लस -5 mu अपॉन 3। हाँ, सॉल्व करो। -2 + 5, दैट्स 3। 3 mu/3। जी, मुझे भी यही मिला था, बट वो तो अपॉन mu, 3 वाला पार्ट मैंने कैंसिल कर लिया था। हाँ तो उसमें गलती हुई ना, लिख के करो, ये बिल्कुल एग्जैक्ट mu आ रहा है। अच्छा, इसको भी जरा वर्कआउट करो। mu/3 + 2 mu/3 अपॉन 6। इज इक्वल टू, सर अपॉन 6 है। नहीं वो कट गया ना 2 और 3 से, देखो 2 और 6 कटेगा ना, जी। इसको काट के ऐड करो ना। वो लिखा हुआ है 2 mu/6, तो 2 1 2, 2 3 6, वो कट गया ना। या और फिर तो ये बनेगा 3 mu/3, तो ये भी mu आ रहा है, तो एक सारे mu आ रहे हैं। Only one is not coming to be mu. So what should I do now? आंसर बताओ ना। This is वी शुड not resistant. 3 के अंदर हमें mu आ रहा है। तीनों में mu आ रहा है, एक में नहीं आ रहा। We should go for the one that's not consistent. Yes. B. So the answer is still B. So that was a lucky solution you did, even though our calculation was wrong, but answer was right. So that was a lucky try. Acha, particle X has a speed V and collide with a stationary identical particle Y. The collision is perfectly elastic. He is using the same term here. Perfectly elastic. Elastic. What are the speed and direction of the motion of each of the two particles after the collision? If it's perfectly elastic, won't they both go in opposite directions? Sorry, They both will end up going in opposite directions after the collision, right? Y will go towards V and X will go towards minus V. kaise? Because what is the total momentum before collision? Total momentum before collision will be their identical masses. तो अगर ये आइडेंटिकल मासेस हैं तो एक तरीका मोमेंटम वाला, दूसरा वो रिलेटिव स्पीड वाली अप्रोच है। टोटल मोमेंटम बिफोर कलीजन विल बी, अगर मैं इनके मासेस कर लूं क्योंकि आइडेंटिकल हैं, तो इट विल बी mv प्लस 0 विल बी mv। अब आप वर्कआउट करो किसमें mv आ रहा है। यहाँ पे रिलेटिव, दूसरा अप्रोच होता है रिलेटिव स्पीड। For perfectly elastic collision, relative speed of approach is equal to relative speed of separation. So if they collide, I have this option and I have the option of theory of perfectly elastic collision. What's the theory for Hassan? Theory for perfectly elastic collision? Relative speed of approach is equal to relative. There is no kinetic energy lost.
in a Then perfectly elastic collision. सेपरेशन। तो अब इनमें से कोई भी लगा दो। कैलकुलेट करो मोमेंटम फॉर द फर्स्ट वन। 0 प्लस mv इज इक्वल टू mv। सो फर्स्ट तो शूट कर रहा है। सेकंड वाला लगाओ, m इंटू v अपॉन 2 V/2 प्लस m v अपॉन 2, mv अपॉन 2 प्लस mv अपॉन 2, 2mv अपॉन। 2mv/2 and mv. तो ये तो टाई हो रहा है। अच्छा, टू द लेफ्ट टू द राइट, तो ये होगा m। Minus mv/2 यस, वेरी गुड। m, plus mv/2 so mv अपॉन 2 माइनस mv अपॉन 2। 0. ये तो कम किया। v टू द लेफ्ट स्टेशनरी ये भी नहीं माइनस। होगा. This should be minus mv/2 plus 0. इसमें 2 नहीं आएगा ना, ये भी गलत हो गया। अब बस अब टाई हो गया, ए और बी में टाई हो गया। इट्स अ टाई बिटवीन ए एंड बी। अब रिलेटिव स्पीड की अप्रोच लगाओ। तो उसके लिए हमने क्या करना है? हाफ mv² वाला. सॉरी, उसके अंदर हमने क्या करना है? हाफ mv². नहीं नहीं, ये तो थ्योरी लगाओ ना। वन वॉज मूविंग, वन वॉज स्टेशनरी, तो कोलिजन के बाद रिवर्स हो जाना चाहिए। अगर रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच वाली लॉजिक लगाऊं तो एक को रुक जाना चाहिए, दूसरे को चल जाना चाहिए। जैसे वो कैरम बोर्ड में होता है, स्ट्राइकर मारो तो स्ट्राइकर रुक जाता है, सारी एनर्जी ट्रांसफर टू द डिस्क एंड द डिस्क मूव्स ऑन। तो in that case, between A and B, the tie goes for, the option goes for A, because in B, the relative speed of approach is not equal to relative speed of separation, क्योंकि ये बनेगा v प्लस 0 और इधर बनेगा v अपॉन 2 माइनस v अपॉन 2। इसको जरा रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच से करो। v/2 plus minus v/2. नहीं, जो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच होती है उसमें एरोस इन द सेम डायरेक्शन आर सब्ट्रैक्टेड, एरोस इन द And the ऑपोजिट। opposite in the are added. यस, तो अब ये बड़ा जबरदस्त है। बहुत कम लोगों को ये लॉजिक समझ आती है कि ये भी एक टूल है एमसीक्यूज में। ये बड़ा जबरदस्त टूल है। देखो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच में, सॉरी, रिलेटिव स्पीड, जो रिलेटिव स्पीड की अप्रोच है वो हम लगा के दिखाता हूँ। रिलेटिव स्पीड जो अप्रोच कैसे लगाते हैं, देखो अब इसको जरा ए पे लगाओ। इट विल बी 0 प्लस v इज इक्वल टू v। और जी. इधर क्या है इस वक्त, इधर है v। अगर आप इस पे लगाओगे ना, सवाल पे, सवाल पे क्या है, अगर आप क्वेश्चन पे लगाओगे तो इट इज v प्लस 0 इज इक्वल टू v। जरा बी पे लगाओ, बी पे क्या होगा। This will be दोनों, v/2 plus यस, v/2 नहीं दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये 0 होगा। or minus v/2. जी. तो इसलिए आंसर ए है। और ये जो लॉजिक है ये मोमेंटम से भी पावरफुल लॉजिक है, क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक कलीजन के लिए ही बनी है, स्पेसिफिक टूल। जैसे अगर इसको सी पे लगाओ, v/2 टू द लेफ्ट एंड v/2 टू द लेफ्ट एंड v/2 टू द राइट, ऑपोजिट एरोज आर एडेड। तो इसलिए हमने इसमें डबल चेक कर लिया और हमारा आंसर श्रिंक होकर आ रहा है 8। Now try this question. What is the formula of the force? F is equal to impulse
upon time. F is equal to delta P upon T, that is M V minus U upon T. Okay, you should try it. I'm just coming in a minute. Try this question. I'm just coming. G, have you solved it? जी sir. 20 Newton C. No. Getting 100 Newton. You are getting 100 Newton? No sir, 20 Newtons. Well, I'm getting 100 Newton. Can you check your working?
तो आपने 12 माइनस 8 इसलिए किया because 8 is now in the opposite direction. Because velocity is reversing ना. ओह ओके, मैंने बस 12 माइनस 8 कर लिया था इसलिए. ये तो सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट है मोमेंटम का कि व्हेन इट्स अ रीबाउंड केस. ओके सर, मुझे भी 100 मिल रहा है. गुड. Now look at this. A molecule of mass m A molecule of mass m traveling at speed v hits a wall in a direction perpendicular to the wall. The collision is elastic. What are the changes in kinetic energy and in the momentum of the molecule caused by the collision? So elastic collision, there shouldn't be a change in kinetic energy. Hmm. So it can't be B. So what are the changes in the kinetic energy and in the momentum of the molecule caused by the collision? No changes in kinetic energy Why? because kinetic energy is conserved in an elastic collision. There is no loss Hmm. of kinetic energy. इसलिए अच्छा collision is elastic. Okay, हाँ. तो change in kinetic है तो ये तो दोनों जीरो हो जाएंगे फिर. So it's A. Oh. आसान कैसे हो सकते हैं कैसे होगा? एक सेकंड. ये तो रिबाउंड का केस है. ही इज ट्रैपिंग अस. हसन हसन ही इज ट्रैपिंग अस. इट्स अ रिबाउंड केस. जो ऊपर डायग्राम बनी हुई ना वही है. The object is coming and hitting the wall and the object is rebounding. Therefore, this is the situation. So this is fine. Delta EK is equal to half mv square minus half m. अगर इसका collision निकालो m v square जो इनका चेंज है मोमेंटम का जो चेंज है वो तो जीरो है. दैट्स राइट. लेकिन इम्पल्स जीरो नहीं आ रहा. Delta P is equal to mv minus mv. That is coming to be 2 mv. So he's trapping us. Answer is C. में कह रहे इतना सिंपल कैसे हो सकता? It's a rebound case. It's a rebound case. So it's C. Okay. Because kinetic energy को हमेशा स्केलर होने की वजह से प्लस रहती है बट मोमेंटम कंजर्व होता है. Two identical, perfectly elastic spheres have the same mass m. They travel towards each other with the same speed v along a horizontal, frictionless surface. Which statement about the sum of the kinetic energies of the sphere is correct? Of the kinetic energies. And this is an elastic collision. Total EK before collision is equal to total EK after collision. So the sum of their kinetic energies before impact is half mv square. चेक कर लो. Total Half mv square plus half mv square. total EK before collision should be half mv square
लेकिन ये ऑपोजिट है कि स्क्वायर होता है, प्लस हाफ एम माइनस वी स्क्वायर, तो ये तो एम वी स्क्वायर बन रहा है टोटल, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा। तो जीरो तो नहीं हो सकती, ये भी गलत है, ये भी गलत है, हमारा आंसर तो एम वी स्क्वायर आया। इम्पैक्ट जी आफ्टर इम्पैक्ट, वो तो आफ्टर इम्पैक्ट हो या अगर कलीजन इलास्टिक है, वो दोनों जगह सेम होगा, सेम आफ्टर कलीजन। तो हमें ढूंढना है एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर सिर्फ एक में आ रहा है। तो आंसर इज डी, लॉजिक समझे? जी जी। ठीक है, तो हमने we did these question, we have started dynamics together, we revised some theory also, and we have done questions in writing for discussion। ज़ाहिर है मेरे साथ करने का मकसद तो सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन तो आंसर्स तो आपके पास सबके हैं, बट पर्पस आई ऑलवेज फॉलो, आई वांट टू डिस्कस द थ्योरीज, सो दैट विल बी अ बेनिफिट, सो पीपल रिमेंबर कि भाई ये मेन कॉन्सेप्ट है, so we can revise and solve more questions, so you should try to do dynamics today, और कल तक आप थोड़ा और डायनेमिक्स करके रखो, सो वी विल इंशाल्लाह कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।